Hello dear students, once again welcome back to your myself Ambujraj. Today we are going to see the last section, means that class 10th part 5 acid, base and salt. Before this video we discussed about part 1, part 2, part 3 and part 4. If you had not watched that video, I will upload the link of those videos in the description box of this video. So please go and see the description box of this video. So we are going to start. Here we will just discuss about salt only. As I told you, in part 4 we discussed so many things regarding to salt. So here we are going to see the common salt, which is also known as sodium chloride, that we use in our home. As from part 1, part 2 and part 3 and part 4, guys, we are known from so many facts regarding to information regarding to acid, base and salt chapter. The first thing is that I told you how salt is formed. I told you salt is formed whenever an acid reacts with base, and the compound which we get as product is our salt. The next thing I told you, even salt is also formed in one situation where a metal displaces hydrogen from the acidic compound. In that situation also salt is formed, guys, so leave it. But here we are going to see about common salt, which is NaCl. As we already knew that whenever sodium hydroxide, which is a strongest base, react with the strongest acid HCl, then the resultant value which we get is NaCl, which is our sodium chloride, and water. Here we can see that, guys, water. What is the use of this resultant water, or the water that we get after the reaction? Actually, this water gets evaporated when we obtain this NaCl. As we already knew that most of the salt compounds which we see in our homes are obtained from the sea source, as they are evaporated and they get finally back the salt. But in certain cases, whenever we have to use HCl plus NaOH, which is both of them are strongest base and acid, guys. So these were topics are clear from you. So now we are going to start about their uses of common salt, guys. So guys, here we will see what are the uses of common salt. Means that इतना जानो कि हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है कॉमन साल्ट. इसके बहुत सारे रीजन है. पहला तो हम लोग जानते हैं कि बिकॉज ऑफ गेटिंग टेस्ट वी यूज द कॉमन साल्ट. सो वी कैन सी हियर uses. Before that, guys, I am telling you all, if you are getting even a small information also, please go and subscribe the channel, because our channel is totally based on foundation level, as we are seeing class 8, class 9, class 10, 11th and 12th. Even class 12 also I will upload videos, but you have to wait until 1st January of 2023, because from there only we will start the class 12th and 11th videos. So guys, here we will see uses of common salt. The first thing, which are the uses of common salt. First I told you, for getting taste we add in our food. So we can say here for getting taste. Next thing is that, do you know common salt which is we get from the resultant value of the compounds such as sodium hydroxide and HCl is also a type of raw material? Yes, guys, because later this common salt becomes raw material for different other compounds, such as you might have heard washing soda, caustic soda, even one more type of soda, baking soda. These all soda. Guys, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना जानो कि इनमें से बहुत सारे हम लोग अपने घर पे यूज करते हैं. हाँ, अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा. चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इसका यूज क्या क्या होता है. तो वी कैन राइट हियर, for obtaining different compounds like caustic soda, washing soda and baking soda. ये सभी गाइस हम लोग इसी NaCl के थ्रू वापस हम लोग पाते हैं. गाइस वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, कैसे वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. लीव इट. द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी यूज दिस NaCl for what? We use this NaCl for preventing our pickles from getting bad or getting what? From getting spoiled. So we can say for prevention of pickles. Even guys, one major thing that we have to see regarding to the uses of sodium
क्लोराइड इज दैट गाइस की सोडियम क्लोराइड का एक बहुत बड़ा यूज क्या है कि इससे हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट बनाने में या सोप बनाने में गाइस, सॉरी सोप बनाने में। अब देखो सोप कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे पहले मैंने बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही मैंने डिस्कस किया था आपको वहां पर सोप के बारे में। सोप देयर आई टोल्ड यू गाइस कि सोप एक्चुअली क्या होता है, हाउ वी कैन मेक सोप। सो गाइस सोप बनाने के लिए हमारा एक और एसेंशियल प्रोडक्ट क्या है, वो हमारा NaCl मींस दैट सोडियम क्लोराइड है गाइस। And now we are going to see about the formation of different compounds like caustic soda, caustic soda and baking soda guys। ये तीनों कंपाउंड के बारे में डिटेल से जानेंगे एंड इनके तीनों यूजेस के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग NaCl के थ्रू ये तीनों कंपाउंड्स पा सकते हैं गाइस। So let's see and discuss about the first compound which is our caustic soda, baking soda or caustic soda। So first we are going to see about baking soda। So guys, first we are going to see about caustic soda, which is our sodium hydroxide। So guys, सबसे पहले जानेंगे कि actually how we get the caustic soda from NaCl guys। So we are going to start, but before that guys, let me tell you, caustic soda is also termed as sodium hydroxide। यहाँ पे हमेशा ये बात याद रखना कि जितने भी सोडा होते हैं, देखो आगे मैं बताऊंगा, वॉशिंग सोडा, उसके बाद बेकिंग सोडा, उनमें सभी में एक चीज देखना कॉमन रहेगा कि सोडियम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये सोडियम का कंपाउंड NaCl से सभी का फॉर्मेशन होता है गाइस। इतना याद रखना कि NaCl वर्क्स एज ए रॉ मटेरियल फॉर दीज ऑल कंपाउंड्स। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ caustic सोडा इज फॉर्म्ड बाय NaCl और सोडियम क्लोराइड। तो चलो देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग कि कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं गाइस क्या कि caustic सोडा कैसे निकाला जाता है या कैसे लाया जाता है हमें NaCl से। तो सबसे पहले ये जानो कि you might had heard one word from your basic classes, from class 8 only, you might have heard about brine water। You had heard, no? Please comment in the comment box section, did you hear this word or not? First term, which is our brine water। You know what is brine water? Brine water is nothing but it is a type of concentrated salt solution। Concentrated means, do you know? Yeah, a type of solution where this solute is more as compared to solvent। So we can say that we get this caustic soda from the concentrated salt solution, or we can say here brine water। Brine water। But the next question arises guys कि how we get the caustic soda from brine water। Actually brine water is further electrolysis process takes place and the resultant value we get here the sodium hydroxide। Let me write the complete reaction which takes over here। First we will see the only term or the only process which goes over there, then we will try to balance the equation। तो चलो पहले देखते हैं कि ये कैसे बनता है। पहले ही हम लोग का क्या है यहाँ पे NaCl। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ध्यान देना है कि एक्चुअली क्या क्या होता है। सेकेंड H2O, which is our water, then here electricity we are passing, electricity, so electrolysis process is taking over here। Then we can see that the next resultant value that we get over here is that I told you NaOH। Then we can see here O, one more H is here, so what we will get H2। Then or we can leave here H, then I will tell you how to balance it। Even one more thing we can see here O, Cl is also left, so we can write here Cl। Now guys we can balance the equation। Now we got the basic equation, now we are going to balance it। Actually we can see here guys Cl, we know that Cl can't be, yeah, we know that in class 9 we studied that Cl and O, even hydrogen also always comes under two form, और उसका atomicity क्या होता है, 2 atoms always are required for the hydrogen atom or hydrogen element to stay in a chemical reaction। So here we can see H2 plus Cl2। Then further we can see here only 2 and 2, how is possible, 3 we are getting। So we can do one thing over here, what we can do guys, let me think, yeah, we can do here 2H2O। When we will do here 2H2O, then we can see here NaOH, here we can see NaOH, leave it। Now we can see here NaCl, here also 2 is more required, so we can do one thing, what we can also multiply here 2। So what we will get over here guys, look here 2Na, but here only one Na is getting, so we can write here another 2। So let me balance the equation and check how many atoms are available in both reactant and both products। So we can see 2 atoms of Na, no problem। Then we can see Cl2, no problem। And here we can see 2H2, यानी H के पास कितना 4 compound, so we can see H is over 1 here and H2 over here। So is there anything more required? So now let's see the more things that we can see here। guys, one thing that we are going to leave। तो चलो हम लोग देखें एक चीज कुछ ना कुछ छूट रहा है। अब क्या छूट रहा है देखो,
अब हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पर से हम लोग एक चीज गलती क्या कर रहे हैं, देखने तो मुझे क्या इक्वेशन बैलेंस है। तो गाइस हमारा तो इक्वेशन बैलेंस है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो फाइनली वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वन Na का 2, Na का 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, Cl का 2, Cl का 2 नो प्रॉब्लम, देन H2 H4, so here we can see H2O H2 no problem, then here we can see O2 O2 no problem, means that guys our equation is totally balanced. Now we are going to see here we got the our product, or we can say our next material which is sodium hydroxide और कॉस्टिक सोडा। गाइस तो आपको क्लियर हुआ कि कॉस्टिक सोडा कहां से आता है, कैसे आता है, यानी आसमान से नहीं टपकता, उसे हम लोग टपकाते हैं, नहीं टपकाते हैं भाई, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूजेस रिगार्डेड टू द कॉस्टिक सोडा। यस गाइस, यूजेस रिगार्डेड टू कॉस्टिक सोडा। फर्स्ट यूज देखो क्या, फर्स्ट यूज एक्चुअली कॉस्टिक सोडा इज आल्सो वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस बिकॉज caustic soda further helps in the formation of two other compounds which are baking soda, washing soda. So guys here we can see these two compounds are further made, or we can say indirectly made from NaCl or sodium chloride. The next thing guys we can see here, a caustic soda is also essential for us because we use caustic soda in our homes. How? Let me tell you how we use the caustic soda in our homes. So guys here we are discussing about the uses regarding to caustic soda. First I told you caustic soda indirectly help in making of baking soda, washing soda, or directly help by the NaCl sodium chloride। भाई इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको कंफ्यूज ना करने के लिए लिख देता हूँ indirectly, बस इतना समझो indirectly, क्योंकि डायरेक्टली ये कहाँ से बनते हैं, NaCl या सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। नेक्स्ट थिंग गाइस कि हाउ वी यूज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट थिंग गाइस आपने सुना होगा कि बी यूज फॉर मेकिंग paper. Yeah guys, it is absolutely all right because sodium hydroxide is a type of base and this base is used for making paper. And I told you in first part only that we are using sodium hydroxide for making soaps and detergents. You might be getting that video. Are you getting some 10 information from that video guys? Yeah, soaps and detergents. The next thing guys, how we are using sodium hydroxide, caustic soda. How we are using caustic soda? 1 2 3 uses are over. Yeah, another thing you might had heard about this word rayon. Do you remember what is this rayon? I told you in class 8 you studied about synthetic fiber, types of fiber, two types of fiber, one artificial type, natural fiber and synthetic fiber guys. And rayon I told you about which type of fiber and how it is considered as semi synthetic fiber because rayon is made from cellulose. That will leave it guys, but we have to remember certain things even in class 10th also. So guys from here we can see that these are the uses regarding to caustic soda, but here we can see that after performing this reaction we are getting two more resultant or reactant which resultant or product. What is that? H2 and Cl2. तो चलो guys फटाफट से देखते हैं H2 का यूज क्या है and Cl2 का यूज क्या है। So leave it guys, आपको मैं पहले बताता हूँ ऐसे एसेंशियल क्या क्या है H2 का। You might have heard this word. H2 is used as a fuel in aeroplanes, aircraft. There we use H2 as fuel. और leave it guys, मैं आपको एक टेबल देता हूँ, चेन प्रोवाइड करता हूँ like that only. Uses regarding to H2 means hydrogen. So guys we are discussing about the uses regarding to H2 which is also known as our hydrogen guys. So first use which we use in our daily life is that we use for making HCl. HCl is what? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सभी एक दूसरे से डिपेंडेंट भाई, इतना जान लो कि एक अगर तुम अच्छी तरह से जान गए ना तो सब बना दोगे। HCl फिर वही बात, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गाइस। या लिव इट। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन से, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। नेक्स्ट मेथनॉल भाई, मेथनॉल, इथेनॉल, ये ब्यूटेनॉल, कुछ भी नॉल है ना, इसे बस आप क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, नेक्स्ट के बाद एक चैप्टर आपका आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो गाइस वी विल सी ऑल दोस थिंग्स। क्या है ये? हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो CH3 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। CH3 के बाद कुछ भी लिख दो। अभी आपको नहीं याद है, मान के चलते हैं, फॉर्मूला भी मत रटो, तुम इतना जानो कि यहाँ पे CH3 आना है। CH3 क्यों है मैं बता दूंगा क्लास 10 के अगले चैप्टर में, लेकिन इतना याद रखो कार्बन एंड कंपाउंड आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला, क्योंकि इतना बढ़िया से जानेंगे ना गाइस, नथिंग वी विल लीव ओवर हियर, ऑल वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर बिकॉज मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आई गोट, आई एम ऑलवेज सीइंग दोस
comment from you all that class 10 का कार्बन कंपाउंड बहुत वास्ट है, वीडियो बनाओ, I will upload video, wait, and even one more topic regarding to class 9 diversity. I am selecting these two particular chapter for our best week. I will make one best week on our 1st January और leave it guys, बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको पहले बताता हूँ, मैं उससे पहले आपको मैं एक बेस्ट वीक करके लाऊंगा, BEST बेस्ट वीक, and in those best week we will just see 2 chapters of whole class 10th and 9, which is diversity, and another chapter which is our carbon and its compound guys. So wish you all a very what means that you have to see that video, what that only I am waiting. So next thing we are going to see about the uses regarding to hydrogen. मीन्स दैट क्या क्या यूज है, तो पहला तो देख लिया कि हमारा HCl बनता है, फर्टिलाइजर बनता है, मेथनॉल बनता है, तो अब एक चीज और जानो क्या बनता है, देखो सोचो HCl का क्या यूज है, मैंने पहले बताया हाइड्रोजन, हाँ रॉकेट fuel, but there we use another type of hydrogen which is our liquefied hydrogen. So guys, these all are the uses of hydrogen. तो अब चलो देखते हैं हमारे uses of chlorine. तो uses of chlorine के बाद देखेंगे, एक चीज और पहले बताता हूँ, देखो ये जो HCl बनता है, HCl हमारे लिए काफी एसेंशियल है, बस इतना याद रखो, ये HCl हमारे लिए, हमारे बॉडी में भी आप जानते हैं, मैंने बायोलॉजी में बताया पार्ट 1 में, हमारे स्टोमक में कैसे HCl रिलीज होता है, ये HCl हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं भी आपको बताने वाला हूँ क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या है, देखेंगे वहाँ पे HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है गाइस, कैसे हम लोग हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं, हमारा क्लोर अल्काली प्रोसेस विच इज ऑल्सो नोन एज रिजल्टेंट वैल्यू वी गेट HCl। तो चलो यूजेस देखते हैं रिगार्डिंग टू क्लोरीन। So guys, we are discussing here the uses related to Cl2 which is also known as chlorine। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहला यूज क्या है हमारा, बहुत ही आसान है, जो सब कुछ इंटर कोरिलेटेड है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, like that only I'm writing here HCl formation या FORMA formation। So over guys, next thing we can see here, we are using HCl for bleaching powder। What is this bleaching powder? अरे कुछ नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर है क्या, चलो ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो ब्लीचिंग पाउडर को आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, क्योंकि बहुत बड़ा एक टॉपिक आने वाला, वहां से हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली किस खेत की मूली का नाम है, छोड़ो ये मूली का नाम है या बैगन का नाम है तो वहीं पे पता चलेगा। लेकिन नेक्स्ट गाइस, व्हाट इज द यूजेस ऑफ Cl2? चलो यूजेस ऑफ Cl2 का एक यूज क्या है कि दे आर यूज फॉर मेकिंग PVC और वी कैन से डायरेक्टली प्लास्टिक्स। यस गाइस, वी यूज क्लोरीन फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स। या you are hearing very absolutely right thing which I am telling you. Yeah guys, you have to remember one thing is that we are using chlorine for making plastics. The next thing is that why we are using or how we are using, we will tell it later, but next thing we have to see is that we are using chlorine for purification of water, तो प्यूरिफिकेशन कैसे होता है आपको पता है कि क्लास 9 में we studied there guys, what we studied there the process of chlorination। बहुत बड़ा चैप्टर आपका, क्या चैप्टर है, सेपरेशन ऑफ टू मिक्सचर कंपाउंड, लगभग बहुत बड़ा कुछ वहां पे पढ़ना है, लेकिन है छोटा चैप्टर, बस कुछ नहीं है। तो इतना जानो कि हमारा यूज कहाँ पे होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर मीन दैट बाय द प्रोसेस ऑफ chlorination। So now we are going to see about the uses regarding to HCl or we can say that hydrochloric acid। So guys, here we are discussing about the uses regarding to HCl which is also known as क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो चलो जानते हैं पहला यूज क्या, देखो सेम मैं बार करता हूँ, इसका भी यूज वही है, फॉर्मेशन ऑफ PVC और वी कैन से डायरेक्टली प्लास्टिक्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक्स। सेकंड यूज वी कैन सी दैट गाइस, यू माइट I made one short video there, I told you how we can burn magnesium ribbon, I told you, yeah I am remembering that, I told you, even we studied in chapter 1 only that how we can make coating of copper on iron nail, I told you there, I told you the process of galvanization which we use before we have to clean that HCl, we have to clean that iron nail through HCl because it clears all those impurities, or we can say that rusting of iron is cleared through HCl guys। So we can write here for cleaning iron before reaction, or we can say before galvanization, leave it। But the next thing guys we can see here, no problem, next thing which is the use of HCl। चलो HCl का अगला यूज क्या है, देखो we are using HCl for making cosmetics
कॉस्मेटिक्स मतलब आप समझो रिलेटेड टू ब्यूटी। या गाइस वी यूज HCl फॉर आवर ब्यूटी पर्पस, लिव इट बिकॉज ये तो बहुत आप लोग जानते हैं, इसके बारे में क्या बताऊं, बताओ कुछ भी बचा नहीं है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द यूजेस रिगार्डेड टू HCl। एक यूज और क्या है, देखो एक यूज और क्या है, ये वाला जो रहेगा ना HCl, इससे हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर यूजिंग और फॉर डिकम्पोजिंग सर्टेन कंपाउंड विच इज हार्मफुल फॉर अस। देखते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं हमारे स्टोमक में ये रिलीज होता है फूड पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट गाइस वी आर गोइंग टू सी about a type of another, I left one down. What I left guys? Before that let me tell you. चलो जान लेते हैं हमारा क्लोर alkali process, alkali process. What is this chlor alkali process? भाई कुछ तो समझ में नहीं आ रहा क्या है क्लोर। देखो भाई क्लोर क्या होता है, आपको याद है मैंने अल्काली बताया था, टाइप ऑफ बेस विच गेट इजिली डिसॉल्व इन वाटर। तो ये तो भाई पता है क्लोर क्या है, क्लोर कुछ नहीं बस क्लोरीन है। क्लोर क्लोरीन अल्काली क्या कुछ नहीं भाई, मैंने बताया HCl इज द टाइप ऑफ कंपाउंड विच वी गेट बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोर अल्काली प्रोसेस। वैसे ही एक प्रोसेस होता है इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl को जब आपस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे। देखो अब आप सोच रहे हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जब हमारा HCl मिलेगा तो क्या बनेगा, बहुत सारे स्टूडेंट को वही क्या बनाने जा रहा है अभी देखो, अरे बहुत ही आसान है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हमारा क्लोरीन मिलेगा तो एक मस्त कंपाउंड बनेगा। HCl के बारे में तो बात हो गई, HCl के बारे में बात हो गई, कैसा एक क्लोर अल्काली प्रोसेस है। नेक्स्ट एक और क्लोर अल्काली प्रोसेस का एग्जांपल देता हूं कि हम लोग रिएक्ट कराने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। व्हाट वी गेट हियर, देखो यहाँ पर से हमें तो एक चीज भाई पक्का है कि Na मिलेगा। अब Cl को ऐसे रहने दो Cl। अब सोचने वाली बात है वो क्या मिलने जा रहा है यहाँ पे, अब हम लोग को शायद बन नहीं रहा है, बनेगा 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 कैसे बनेगा, देखो अब फटाफट से इसे लिख दो। अब भाई सोचेगा ये कौन सा कंपाउंड बना दिया, इसमें तो NaClOH, ये तो कोई कंफर्टेबल बैठ नहीं रहा है। हाँ भाई ये बैठ नहीं रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो। सो गाइस वी आर डिस्कसिंग हियर द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन। तो गाइस वी कैन सी ये कैसा कंपाउंड बन गया, इसका तो कोई नाम ही नजर नहीं आता। जी हाँ, इसका कोई नाम ही नहीं है। अब इसका नाम कैसे हुआ, जब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस H2। अब इससे हमें लग रहा है ये केमिकल रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। या you are thinking right because this chemical equation is not balanced. So what we can do here guys, we can do one process that we can try to balance this equation. This is your HW, you can balance this equation and give me the proper result in the comment box section guys. But let me tell you this compound is very very essential because this compound be used for bleaching agent, bleaching agent. Before that guys आपको पता है ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्यों होता है यूज, बताओ। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है, देखो ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुन के तो आपको मोस्ट ऑफ द दिमाग में क्या आ रहा होगा, ये कोई क्लीनिंग एजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि वी यूज द ब्लीचिंग पाउडर फॉर क्लीनिंग समथिंग विच थिंग वी विल टेल यू लेटर। बट इतना याद रखो कि ब्लीचिंग एजेंट का ये जो हमारा एक कंपाउंड बन रहा है, अब इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना पड़ेगा। अब नाम क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे NaClO है। अब NaClO को क्या लिख सकते हैं, सोचो 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 सोचो। अब आपको समझ में आया कि क्या लिख सकते हैं, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। हम लोग इसे लिख सकते हैं, ओ क्या हो सकता है, NaClO। सोडियम तो पता चल रहा है हमें, क्लोरीन पता चल रहा है, वो क्या हो सकता है, लिखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। बिफोर दैट गाइस आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने क्लास 9 में क्या सिखाया, हाउ वी कैन नेम एनी कंपाउंड। जैसे हम लोग पढ़ना सीख गए पोटेशियम पेंटाऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन वी स्टडीड ओजोन, NH3, NH4, अमोनियम, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये सभी नाम तो हमें पता चल गया कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। आपको पता ही नहीं, कमेंट कर दिया, क्लास 9 में पहले से अपलोडेड है भाई, जाओ देखो तुम सीखो। नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट रिजल्टेंट वैल्यू और नेक्स्ट कंपाउंड विच इज वॉशिंग सोडा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा। विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा वी विल वॉश एवरीथिंग एवरी वेस्ट इन आवर माइंड। So guys, finally we are going to see about washing soda. चलो भाई washing soda के नाम से क्या आ रहा है, हमें तो बस इतना लग रहा है कुछ धोने वाले, हाँ धोने वाले हैं। चलो देख लेते हैं what is sodium washing soda guys. So washing soda is having another name which is very 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 long. क्यों लॉन्ग है, बहुत आसान है, बस जान जाओ क्या नाम है। देखो इसका नेम है गाइस सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। ओ माय गॉड, व्हाट इज नेम, लेट मी राइट, सोडियम कार्बोनेट ओ डिहाइड्रेट। ये तो चल रहा है, ये तो हमारे दिमाग में आया कि सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं हम लोग Na2CO3। अब ये कौन सी खेत की मूली है, डिहाइड्रेट।
बस कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस 10H2O कर दो। अब ये जो कंपाउंड होता है यही तो हमारा होता है वाशिंग सोडा। अब इसे हम लोग ऐसे हटा के ऐसे लिख देते हैं Na2CO3 10H2O is known as washing soda. So now we are going to see, guys, this is not interested, you all are thinking, but this is the most interesting topic of this video, guys. देखो, we can see what is washing soda, how we can perform or how we can get the washing soda. but आपके दिमाग में एक चीज आ रहा है, क्या ऐसा भाई वाटर का एबिलिटी होना चाहिए? हमें तो ऐसा नहीं लगता। वाटर चाहिए कि चाहिए? अगर वाटर नहीं रहेगा तो वॉशिंग सोडा नहीं बनेगा। सोचो, एक ऐसा भी कंपाउंड होता है गाइस जिसमें कि वाटर होता ही नहीं है और उसे हम लोग वॉशिंग सोडा का एक फैमिली मानते हैं। कौन सा? देखो, उसके बारे में मैं पहले डिटेल से बताता हूँ। वहां पे क्या हुआ फॉर्मूला, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, देयर वी यूज और देयर वी डोंट यूज द टर्म NH2O, तो उसका नाम क्या? सोडा एस। अब भाई सोडा ये क्या सोडा लगा के रखा है? चलो सोडा के बारे में, कुछ सोडा के बारे में रिलेटेड जान लेते हैं। सोडा, so guys, we are discussing about soda. I told you a type of compound, another compound is there which is a family of washing soda. There we don't see the NH2O, तो उसका नेम क्या हो जाएगा? Na2CO3। तो भाई ये तो कुछ बल्ले पड़ रही है, हमारे सोडियम कार्बोनेट होगा। हाँ होगा, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम मैंने बताया, सोडा एस। सोडा एस is having another name which is anhydrous sodium carbonate. What is its name? Anhydrous sodium carbonate. So we are going to see about the formation regarding to washing soda. तो चलो स्टार्ट करते हैं, washing soda कैसे बनता है। I always remember one thing, the thing which I told you in the beginning of this video, कि always we have to take NaCl as the raw material of all three. एक तो हमारा caustic soda हो गया, washing soda हो रहा है, लास्ट बचा हुआ हमारा baking soda. So guys, we are going to see the process involved or how we can get the washing soda by the NaCl, by using the NaCl as our what? सोचो क्या washing soda का यूज कैसे कर सकते हैं? As our raw material, or we can say that reactant. So guys, we are seeing the formation of washing soda from NaCl by, so स्टूडेंट सोच रहे हैं तो बोरिंग था, मैंने बार कहा है बोरिंग नहीं है। बोरिंग हाउ? बस इसका प्रोसेस 3 होता है, एक बंदा एक बार में नहीं बनता। ये कैसे बनते हैं? 3 प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। फर्स्ट प्रोसेस वी विल सी, सेकंड प्रोसेस वी विल सी, एंड फाइनली द लास्ट प्रोसेस वी विल सी, देयर वी गेट 10H2O और Na2CO3 10H2O. So first we are going to see the first process of forming NaCl, or we can use, there we are using NaCl. अब इतना याद रखो कि पहला प्रोसेस हम लोग क्या यूज करते हैं? फर्स्ट वी यूज NaCl, देन वी यूज NH3 which is what? Which is ammonia. Next we use what? CO2 which is our carbon dioxide. The next thing हो जो क्या हो सकता है? H2O. So we use this for reactant for getting certain product क्या हो सकता है? सोचो, बहुत बड़ा प्रोडक्ट जाएगा। आपको लग रहा है बहुत, क्या ये कितना बड़ा दे दिया? इतना बड़ा तो कंपाउंड हम पढ़े ही नहीं है, कहाँ से दे दिया? बनेगा बहुत आसान है, बस अपना वर्जन तो फाइन अप्लाई करो, बन जाएगा। रटी रटाई बातों को मत देखना, मैं बार कहता हूँ। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग वन मिस्टेक, इज दैट दे आर जस्ट फॉलोइंग द बुक। अरे केमिस्ट्री है भाई, खेला नहीं है तुम्हारा, अपने मन से नहीं बना सकते हो तुम। अगर तुम चाह भी रहे हो कि अपने मन से हम आसमान से जमीन पे गिरा दे, नहीं पॉसिबल है। कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स है, रिएक्शन का रूल होता है, कैसे बैलेंस होता है, ये रूल होता है। वीडियो बनाया मैंने, उसको देखो, कैसे बैलेंस करना, कैसे फॉर्मूला सेट करना, कैसे रिएक्शन परफॉर्म करना, सभी का अपना अपना रूल होता है। हाँ, उसके बाद तुम अपने मन से करो, बुक का रटा मत याद रखो। अब बहुत सारे बंदे इसे याद करने में वॉशिंग सोडा का Na2CO3 10H2O, भाई क्या दे दिया तुम। देखो अब इसे कैसे हम लोग रिएक्ट करा सकते हैं। तो NaCl NH3 CO2 + H2O। सो गाइस, बहुत देर सोचने के बाद हमें तो कुछ मिला नहीं, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। गाइस वेरी सिंपल दैट वी हैव टू फॉलो। चलो एक चीज बस इतना याद रखो, कोई बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ट्राई मार के देखते हैं क्या वी कैन यूज हियर। फर्स्ट वी विल गो थ्रू, हमें इतना याद रखना है कि ऐसा कंपाउंड बना है जिसमें कि एक साइड तो हमारा सोडियम के साथ कुछ ना कुछ रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। NaH यहाँ पर चले लेते हैं, तो NaHCO2 है, तो अब हमें CO2 एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक O बच जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से गाइस NaHCO3। अब हमेशा भाई मैं बार कहता हूँ, whenever we are reacting or whenever we are performing any chemical reaction, there we have to remember or there we have to follow only 2 concepts. First concept, we have to balance the equation, and second concept, we have to mention the overall process which we are performing. Either we are using electrolysis, electricity, current, or we are sunlight. All those things are needed to be mentioned
that I told you what is catalyst. I told you there in part 1 or in chapter 1 only. So guys, leave it. But before, one major thing I told you, always we have to make one सुटेबल कंपाउंड. ऐसा नहीं कि कुछ में जो मन फुटांगा है जो लिख देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आप इसी इक्वेशन को देखो, ये काफी बड़ा हो रहा है, तो आप लोग सोचो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर से कार्बोनेट क्यों बना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बना दे. तो आपने कभी ऐसा सुना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड? बताओ, तुम सुने हो कभी? नहीं सुने हो. तो कैसे पॉसिबल है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वी कैन से दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो भाई इतना तो बन गया, अब कुछ बच रहा. So we can see here what which are the things remaining over here. So we can see N is more, H3 is over more, or we can see what we are getting NH3Cl2. So we can write here NH4Cl2. So guys, बहुत सारे स्टूडेंट है 4 कैसे ला दिया, तुम गलती क्या बना रहे हो? कैसे नहीं लाऊंगा? 5, 3 plus 2 5. Here we are using just one atom, so 4 atoms are left. So we got here ammonium chloride. So we can perform this double reaction. चलो इसे पढ़ के देखते हैं. सबसे पहले क्या मेरा ये बैलेंस है? First we are going to check whether this reaction of this equation is balanced or not. Na1, no problem. Cl. Oh, how is it possible? Cl is 1, there 2. You might be getting confused. So how we have to balance equation? चलो अब इसे बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं. तो आपके दिमाग में एक ये तो हमारा आ रहा है कि बैलेंस तो नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा? या तो इस साइड लगाएंगे, अब इससे इस साइड लगाएंगे तो ये तुम्हारा पूरा बिगड़ जाए, तो इसे हम लोग ऐसे करके इरेज कर देंगे. सो आई ऑलवेज टेल यू व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग एनी रिएक्शन वी हैव टू चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. तो भाई इतना तो क्लियर हुआ, NaCl अब बैलेंस लग रहा है हमें. अब देखते हैं N1N, H3 to 5, H we are using 1, so 4, NH4 ammonium, all right, and we can see Cl balance. So this first process is balanced, and now we can see after getting this NH4CO3 what we can do. So perform next reaction or next process, second process. चलो second process देख लेते हैं. अब second process में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि यह जो NaHCO3 हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये थोड़ा सा मिनी सोल्यूबल है. वी कैन से दैट इट इज पार्शियली सोल्यूबल विद वाटर, whereas NH4Cl2 भाई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व करके हमारा ये जो कंपाउंड मिलेगा NHCO3, इसके साथ अनदर रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. चलो अब देखते हैं सेकंड प्रोसेस में हमारा क्या. सो गाइस वी आर सीइंग हियर द सेकंड प्रोसेस व्हिच इज आवर NHCO3 NH4Cl. सो गाइस आई टोल्ड यू फर्स्ट वी कैन सी ये तो हमारा पार्शियली सोल्यूबल है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 चीज फिर से फॉलो करते हैं. पहले इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये पार्शियली होता है डिसॉल्व, तो इसे हम लोग फाइनली रेसिड्यू फिल्ट्रेशन के थ्रू वापस पा लेते हैं, एंड देन वी हीट दिस NHCO3. अब NHCO3 को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो देयर वी कैन सी अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन और अनदर टाइप ऑफ चेंज और केमिकल चेंज दैट वी आर गोइंग टू सी क्या हमें मिलता है क्या नहीं मिलता है. चलो देख लेते हैं. तो वी आर टेकिंग हियर, अब हमारा NHCO3 इज व्हाट, आवर reactant, or we are decomposing this one, so we are providing here heat as a catalyst, so we have to write here. And now देखो अब हम लोग इसे कैसे हम लोग हीट दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देख लेंगे. So first we can see ये हम लोग का एक चीज का फॉर्मेशन करता है Na2CO3. तो अब याद आ रहा है ये हम लोगों ने स्टार्टअप में देखा, इसका नाम क्या था रे, कुछ सोचो. इसका नाम मैंने बता दिया था सोडा एश, और आई टोल्ड यू एनीहाइड्रोरियस washing soda or sodium hydrogen carbonate plus NH2O, because there we see NH2O के Na2CO3 के साथ NH2O अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सोडा एश या एनीड्राइहोयस या एनीहाइड्रोस वॉशिंग सोडा. तो इतना बार एक तो मिल गया हमारा Na2CO3. हम लोग देखेंगे कि अगला क्या मिल सकता है. देखो अरे CO3 तो हमारा हो गया, क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो. सो वी आर गेटिंग कंफ्यूजन. हो हमारा ये सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या, सोच रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल सही है. अब देखो इसका हम लोग क्या मिल सकता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट एक किया हमारा H बच गया यार, H बच गया तो H का क्या करेंगे. H का कुछ नहीं करेंगे, बल्कि H अपना एक नया फॉर्मेशन ले लेता है. अब नया फॉर्मेशन लेने के लिए तो हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है. H का एक ही एटम है, कैसे बनेगा, सोचो सोचो सोचो. अरे बन तो गया, कैसे बना, देखो 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 बना, हमारा बन गया, हमारा तो बन गया, आपका बन गया. देखो अब मैं चाहता हूँ कैसे बन रहा है. तो फर्स्ट वी कैन सी अब तो हमारा कुछ लॉजिक नहीं लग रहा. H बच भी गया, Na2CO3 पूरा कैसे करें, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे Na का 1 है, Na का 2 कैसे हो सकता है. So we can multiply here 2. Why we multiplied here 2? Because we have to make soda ash, and I told you soda ash, the chemical formula of soda Na2CO3.
सो वी कैन सी ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारा ये केमिकल बैलेंस हो गया। कैसे देखो, अब इससे तोड़ते हैं तो Na का 2 हमारा Na का 2 मिल गया, CO3। अब O के साथ कितना आ गया भाई, O के साथ 6 आ गया, तो O के साथ 6 आ गया तो हमारा एक और बन गया CO2। अब हमारा C के साथ 1 ले लिया हम लोगों ने, 1 बच गया तो CO2 एक और भी बन गया। अब हम लोग सोच रहे हैं H तो 1 था, अब H के साथ 2 भी हो गया। अब H के साथ 2 और O के साथ 6 हो गया, तो 3 हमारा यहाँ, 2 यहाँ और H हमारा एक 1 ऑक्सीजन बचा भी है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं H2O। सो गाइस वी कैन सी बी बैलेंस दिस इक्वेशन ऑल्सो। हमेशा याद रखो, मैं बार बार तो हमेशा बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो तुम्हारे 100% नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम से। अब हमारे यहाँ से Na2CO3 प्लस NH2O और H2O मिल गया। अब इसका क्या करें, अब फिर से वही करते हैं भाई, थर्ड प्रोसेस तो एकदम इंटरेस्टेड है, बकवास मत समझना। सो गाइस वी कैन सी व्हाट वी हैव टू डू, Na2O3 is further dipped into water for getting the baking soda which is our Na210H2O, sorry Na2CO3 10H2O. So why we dip the sodium or soda ash for getting the proper washing soda? तो फाइनली ये जो हम लोग इसे वापस डिकम्पोज करके लेवल किया, फिर इसे पानी में डुबा दो, डुबा दोगे तो क्या बने हमारा वॉशिंग सोडा। So we got the clear formula regarding to washing soda, how washing soda is made. Now we are going to see about their uses regarding to washing soda. Washing soda मैंने पहले बताया क्योंकि यूजेस हमारा बहुत सारे यूजेस हमारे हाउस होल्ड वर्क में। So guys, here we are seeing about the uses regarding to washing soda. So guys, we can see the first use क्या है guys, चलो। As I told you, washing means what? For cleaning purpose. So we can see here for cleaning agent. For cleaning agent, we use this washing soda. So first clear guys. Second, we can see washing soda is essential for making what? For making one thing, which is very very essential. What is that? For making glass. Yes guys, for making glasses we use the washing soda. And even आप लोगों ने देखा है कि हमारे glass, there are different hard, or we can say there are different types of glasses. Certain glasses are very what? We can see they are very less powerful, but certain glasses are, oh my god, they can't be broken even by bullet. They are bulletproof glass. You know that our Prime Minister, our President, and even most of the presidents of different countries, apart from Joe Biden, who is the President of America, he also used to move in a car which is bulletproof glasses are made. So guys, we can see for making glasses we use washing soda. The next thing is for which we are using washing soda is that for making or for removing the hardness of water. Hardness of water. आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा. You might not be getting this proper way regarding to hardness of water. Actually, we know that water is what? Water is a type of fluid, and even fluid also contains certain pressure. We know that what is that pressure, क्लास 9 में क्लियर है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, बस इतना याद रखो. द नेक्स्ट थिंग रिगार्डेड टू द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा इज दैट वी यूज फॉर मेकिंग बोरैक्स. बोरैक्स व्हाट इज बोरैक्स? भाई क्या तू दे दिया बोरैक्स, कुछ तो सुना नहीं है. अब एक बोरैक्स एक्चुअली होता क्या है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. अब बोरैक्स क्या होता है कि ये सोडियम कंपाउंड होता है, Na कंपाउंड. अब बोरस का एक यूज क्या होता है कि जहां जहां पे सोडियम का यूज है बस वही यूज हमारा बोरस का भी है. आपको याद होगा कि सोडियम हमारा एक ऐसा मेटल है, बताओ मेटल है कि नहीं. अब सोडियम का कोई याद आपको यूज आ रहा है? सोडियम तो हम लोग पढ़ते आए हैं, क्या यूज था मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा आपको लग रहा हो, लेकिन है यूज. मैं बताता हूँ सोडियम का यूज क्या है. बिकॉज वी यूज सोडियम इन आवर फर्टिलाइजर्स. आपको याद होगा कि सोडियम का यूज हम लोग फर्टिलाइजर्स में करते हैं, क्योंकि सोडियम के साथ हम लोग कई बार ऐसे एनपीके, याद है क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा एनपीके, देयर वी स्टडी सोडियम, potassium and calcium. So guys, we are going to see about the next compound which is our baking soda. चलो baking soda. So guys, we are going to see about baking of soda. आपको याद होगा बात ही बात में हम लोगों ने baking of soda के बारे में डिस्कस कर लिया. Yes guys, we discussed about baking of soda in process of making baking soda. Where because आपको याद होगा हम लोगों ने baking soda को 3 प्रोसेस में डिवाइड किया था. In first process what we did, there we used this washing soda, or there we used to react that Na2CO3 with NH3 ammonia, and what we got, and even 2 compounds more we added there, so we got one value which was NaHCO3, that I told you, sodium hydrogen carbonate. That is what our baking soda guys. So I told you baking soda be made already, there is no any more required regarding to baking soda. तो चलो भाई थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्योंकि बेकिंग सोडा भी वही हमारा याद रखना हमेशा NaCl अपना, तो भाई इससे बहुत रिलेशनशिप बन गया. NaCl बार बार NaCl ही बात आती है.
Next we use NH3, then we use their H2, then we use their CO2. ये सभी तो भाई बहुत बार हो गई है, बहुत बार. So what we got there? There I told you इतना बड़ा compound. The same thing which we have to do. Always we are getting that only NaHCO3. Plus what? ये इतना बड़ा compound. फिर से वही दे दिया, हमें क्या बनाना पड़ेगा? NaCO3. अब फिर से पल्ले नहीं पड़ रहा यार, क्या तुम दे रहे हो बार. अरे वही तो है, एक बार देखते हो भूल जाते हो. बताओ, आपको याद हो रहा होगा NH4Cl. Cl2 मैंने लिख के कट किया था पिछले बार एग्जाम्पल में, मेरे को याद है, आपको नहीं याद है. बताओ. You are students, you are multi-intelligent, you are multi-talented. Yes, you are multi-talented because a teacher is less talented than a student. Yeah, I am all right. I am saying all right because all the students think themselves as I am genius. Yeah, keep your geniusness up and be always achieve something in your life. So we are saying here NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2 NHCO3 plus NH4Cl. So we got our baking soda. So no more discussion regarding to baking soda, guys. Now we are going to see about the uses required or uses that we use for baking soda in our homes. So let's start. So guys, finally we are going to see the uses regarding to baking soda. चलो start करते हैं. First use of baking soda is for removing acidity. You might be remembering that when I started the video in part 1, there I told you how we are using bases for removing our acidity. There I told you, no? Yeah guys, I told you. For same purpose we use baking soda also because baking soda contain NaCO3. The next thing guys, why we are using and how we are using, I will tell you later. But the next concept regarding to uses is that we are using baking soda for also one purpose, which is for baking powder. Baking powder. अब भाई बेकिंग पाउडर तो बेकिंग सोडा के नाम से ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो अब चलो बेकिंग पाउडर का यूज कैसे होता है, आप लोग याद रखे होंगे. फॉर मेकिंग केक्स, पेस्ट्री, for these all purposes we use the baking powder. But the last use is very essential because we use the baking soda in fire extinguisher. Fire extinguisher. Yes guys, we use the baking soda for in fire extinguisher. There we use one acid which is known as baking, or we consider a type of acid which is baking acid. Actually, do you know how we use baking soda in fire extinguisher? Yeah, there is a whole process involved. You might have heard the bottle of baking soda. So भाई आपको याद आ रहा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोगों ने देखा, लेकिन उसके बारे में हम लोग ये नहीं जानते थे. चलो इसके बारे में आपको पहले बताता हूँ. एक मैं इसके लिए प्रूफ वीडियो लाऊंगा गाइस, बट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस वीडियो आई सॉ द video duration is about 45 minutes. You can imagine how lengthy this video is. So the two topics which are left is plaster of Paris and bleaching powder. These two topics we will discuss in next part guys, because get some more information in. Actually, let me tell you one major thing about our videos is that you all are not asking any doubt regarding to any topic from me. That's why I'm not getting proper, what can I say, I am not getting proper feedback from you all. Because of that I'm giving certain less interest in making this video. So guys, please go and ask questions, because whenever you ask questions, even you all are not joining our Telegram channel. I am seeing that from the last 1 month only 100 members had joined our Telegram channel. So go and join the Telegram channel. That's why I wish you a very very happy ending of this video. Meet you all in next video. Thanks for watching this video. Keep it up your learning and improve your learning. We always learn something new and try to improve our knowledge.